So you have to have a very detailed interest in an area which is beyond what is expected of you as a part of your professional commitments. Hobby का मतलब क्या होता है? Hobby is something that you engage in beyond your other regular expected commitments. ठीक है, हॉबी का मतलब क्या होता है? हॉबी इज समथिंग दैट यू इंगेज इन बियॉन्ड योर अदर रेगुलर एक्सपेक्टेड कमिटमेंट्स. ठीक है, अगर मेरा प्रोफेशन is I'm a doctor and if I say hobby is treating patient, it doesn't match. ठीक है, आपका ऑप्शनल फॉर एग्जाम्पल से सोशियोलॉजी है, मैं हॉबी इज लर्निंग अबाउट ट्राइब्स. इट लुक्स लाइक ना आपने स्मार्टली अपना हॉबी बना लिया है. बट हाँ, अगर जेन्युइनली यू रियली रीड अबाउट ट्राइब्स एंड नो अबाउट देम एंड योर ऑप्शन इज सोशियोलॉजी, देन मेंशन इट. So we want a very genuine answer here. What is your hobby? And hobby इसमें कि you take a lot of detailed interest. Hobby is not turning pages about something. I watch movies. वो hobby नहीं होगा. Hobby होगा when I can talk in depth about movies, script writing, screenplay. I can comment on dialogues. I can comment on art director. I can comment on probably editing. Like I can sit and discuss the different genres of movies. Then I'll say my hobby is movies. Just because I hum couple of songs the whole day, okay, doesn't mean my interest is songs. I'm probably मैं singing करता ही नहीं, but my hobby is song. कैसे? I know about the lyricists. I know about those poetry. I know about different genre of music. Like I can appreciate Indian classical. I can appreciate Western classical. I know about the history of music. Okay, then I'll say my hobbies. So you have to have a very detailed interest in an area which is beyond what is expected of you as a part of your professional commitments. That's a hobby. Otherwise, just mention interest in maybe whatever domain. और नहीं है तो blank कर देना, कोई इश्यूज नहीं. मुस्कुरा देना कि सर नहीं टाइम मिला और क्या सर, I was studying, वो कल्चर ही नहीं था सर, unfortunately, but given a time, I would like to pursue a hobby in this. And I've heard, sir, मसूरी में coffee encourage करते हैं. They do. So I would love, my interest, sir, I think I would like to get into photography. अभी time मिला नहीं, but I will definitely do it. Good enough. So you are under no obligation to bluff here. That's my point. Cooking as a hobby बोलते हो और अरहर का दाल और चने का दाल differentiate ही नहीं कर पा रहे हो. Okay, it shows then. ठीक है, हॉबी कुकिंग, यू हैव मेड राइस दाल एंड चाय बना लेते हो. नो, देन हॉबी शुड बी डिफरेंट. सो आई डोंट थिंक दिस इज द टाइम फॉर लर्निंग हॉबी. वो किताब पढ़ के अगर आपने नहीं किया है, देन यू विल बी इन अ ट्रैप. डिड यू मेंशन एनी हॉबी है? प्लेइंग बैडमिंटन. यू डू इट सीरियसली? ठीक है, फाइन. ओके, बट देन व्हाई डिडंट यू मेंशन बैडमिंटन इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में डालो. वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज ठीक है, बट यू डू इट वेरी सिंसियरली. ओके, नॉट लाइक मी. नॉट लाइक मी, वेल आई डू नॉट नो व्हाट यू मेंट बाय दैट, बट देन यू बेटर से बॉलीवुड मूवीज. तो आपका कश्मीर फाइल पे क्वेश्चन बनता है. ओके, बच्चन पांडे बन जाएगा, अक्षय कुमार तो शूटिंग नाउ ज्वाइन, ओके, सम अदर टाइप ऑफ वो बनेगा. मूवी इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हुआ कोविड का, वो भी बनेगा. Okay, so जब movies कह रहे हो तो do a good depth. Okay, don't keep it superficial. Yes. Acting in the theater and comparing. लेकिन सर मुझसे किसी भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और जब भी इसमें पूछा जाता है सर आई डू वेरी वेल. कभी बोल देते एक्टिंग करने को तो सर बहुत बढ़िया चला जाता है, सिक्सर लग जाता है उस पे चला जाता है, ऐसा हो जाता है. कंपेयरिंग को बोल देता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन पूछा नहीं. तो सर मैंने इस बार जब फिल्म्स का फॉर्म भरा था तो सर वहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है. सर मैं ऑल इंडिया रेडियो में एंकर रहा हूँ, तो इस बार मैंने उसको टेम्परेरी वहाँ पे बता दिया ये काम किया है. तो सर शायद वहाँ से जरूर पूछें उससे. बी रेडी. बट अगेन इस पेज के बेसिस पे आपको आईएएस नहीं बनाया जाएगा. yes, और इस पेज के बेसिस पे आप रिजेक्ट भी नहीं होगे.
इतना मान के चलो. I know somebody, a very close friend of mine, back in my days, his hobby was poetry and शायरी. ठीक है. After I think 5-10 years के बाद में, they entered into poetry, and he was really good. They asked him, he kept on talking about it, full control. मतलब वो कहते हैं ना, वो महफिल हो गया था. ठीक है. He got pathetic marks. Then he realized कि यार मैंने I doing good in that, and they not asking me other aspects. Probably पहले 5 मिनट they made up their mind कि यार ये IAS के लायक नहीं है, अब आया है तो कोई एंटरटेन हो जाते हैं. चलो, बेसिकली आप एंटरटेन कर रहे थे उनको. ठीक है. सो रिमेंबर दिस. सर मैं इसमें से कुछ हटा दूं तो ये मैं कहना 1 या 2 रखो. दिस इज वेरी गुड. एक्टिंग एज हॉबी इज गुड. ओके. कंपेयरिंग इज ऑल्सो गुड. फाइन. तो 2 लेके छोड़ दो. बट इस पे अपना दम मत तोड़ देना पूरा कि भर, जो भरे हो then prepare very well for it, because there are a lot of lead questions from here which will test. Say I'm testing your personality. I'm testing you as a person, your biases, your prejudice, your understanding test कर रहा हूं. Like if I ask you, Kapil, आपका acting as a hobby है, then can I say actors generally are not true to themselves because they keep on putting on roles according to scripts. What do you think? yes sir, that can be one perspective. सोच के बोलना है इसको. I'm not saying I want an answer from you right now, but इस answer के basis पे I will know a lot of things about you. Basically I'm questioning कि are you hypocrite? एक्ट कर लेते हो तो जहां टाइम मिलेगा आप वहां दुखी भी हो जाओगे. पलट जाओगे तो आप हंस भी दोगे. पलट जाओगे सीरियस भी हो जाओगे. मैंने आप क्या हो इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क. इट्स व्हाट आई एम आस्किंग. थिंक अबाउट द आंसर. सो हॉबी के बेसिस पे गो डीप, मेंशन लेस, डोंट फ्लड योर पेज विथ टू मेनी थिंग्स. एक दो नहीं है, स्ट्राइक ऑफ, नथिंग टू लूज. यस. 1 मिनट में कोई क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन से? If I am not mentioning hobbies and I am mentioning extracurricular activities, for example, I have been part of women development cell, DLLE, so I can mention. Yes. बिल्कुल. तो थोड़ा सा briefly 2-3 वर्ड में hit it. Yes. Sir, in a hobbies I can write not in particular in any such, but I should leave blank. नहीं लिखो ना, किए हो ना, talk about it. I want areas where I can ask you questions. Blank छोड़ तो कुछ नहीं पूछूंगा. I participated in NGOs working for women development. Or active participant in NGOs in women development. Something that makes sense to me. और फिर पूछूंगा क्या किया बताओ भाई. कौन? ठीक है. So that's about this. Leadership, same thing. Okay, ठीक है, 1-2 लिखा है, fine, good enough, no problem. That makes sense. इसके बाद I think जॉब एक्सपीरियंस से पूछता है क्या? नहीं पूछता ना इससे. DAF 1 में अब जो भर दिया आपने, ठीक है, उसका कुछ करना नहीं है, बट पढ़ के जाना उसके बारे में. वो क्या रोल था, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट इज एक्साइटिंग, नॉट एक्साइटिंग, विल यू कंटिन्यू दैट जॉब अगर नहीं होता है, या यू नो हाउ यू एज ए यू नो एस्पिरेंट जो भी है, हाउ इज हेल्पिंग इन दैट जॉब. सो प्रिपेयर वेल. नो अबाउट योर सैलरी वैलरी जो भी है लास्ट. ठीक है.